Good morning, students. Today we will discuss about the 7th class social science SST. In this, we will start the chapter first, that is environment. In this chapter, we will read about the physical and nature environment, component of physical environment, effect of natural environment on organism and human environment. So, we will read all this chapter. Now we will further discuss about something about this chapter, that are the important terms to know. First is the biotic component. All the living species in the environment are called biotic component. जो हमारे जीवित प्राणी हैं उनको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक component. Now abiotic component. All non-living things in the environment that will be present, that will be called abiotic component. जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा नहीं है चीजें, अजीवित जो है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट. हैबिटेट, प्लेस वेयर ए लिविंग बीइंग्स लिव्स, वो स्थान जहां पर लिविंग बीइंग्स लाइक एनिमल्स आर लिव देयर, वो जगह जहां पर जो एनिमल्स बीइंग्स होगी जो अपनी जगह बना के जहां पर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. इकोसिस्टम, community of living things and their environments is called the ecosystem. वो चीज लिविंग थिंग्स जिस कम्युनिटी और जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगी, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर? The three major components of the physical environment are three realms: lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Lithosphere is also known as crust. So the major component of the physical environment are the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. What is the lithosphere? The land part of the earth we will call the lithosphere. What is hydrosphere? The water, the surface of the earth where the water is present, we will call hydrosphere. And what is atmosphere? The air that will be surrounding us, we will call it as a atmosphere. And lithosphere is also known as crust. क्रस्ट से भी हम लिथोस्फीयर को बोल सकते हैं, जो दूसरा नाम इसका. द डोमेन और रियलम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. अभी जो मैंने आपको बताया, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? द अर्थ, वाटर ऑन द अर्थ, दैट पार्ट वी विल कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. नाउ द नेक्स्ट इज द ए थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ए थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस, और surrounding air will be called the atmosphere. Now a unit made up of plants, animal and microorganism living together with known physical factor of the environment is called ecosystem. So what is an ecosystem? A unit made up of प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर. वो जगह जहां पर हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसी पूरे यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर. सो द फर्स्ट पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which of the following is not a part of the human environment? So the water is not a part of the human environment because family, houses and society, these are the part of the human environment. Now the second question is the narrow zone on earth where life exists. वो जगह जहां पर एयर अर्थ के लाइफ एग्जिस्ट होती है, we will call it as a biosphere. So biosphere is the narrow zone where the life is exist. Which is abiotic component of the environment? Abiotic component of environment कौन सा है? Soil. Soil is the abiotic component of the environment. Which of these is not a natural environment? So aquarium is not a natural environment. Desert, mangroves, coral reefs, these are the part of the natural environment. So nature provides us breeze, heat, floors and all of these. So nature will provide us all of these. जो हीट्स है वो भी नेचर प्रोवाइड्स करती हैं, जो ब्रीज वो भी नेचर प्रोवाइड्स करती है, एंड फ्लोर्स इट विल बी आल्सो प्रोवाइडेड बाय द nature. So this is the end of our lecture. In this lecture
you have to write the important points on your notebook, and you have also to write the important terms in your notebook, and you have to answer the multiple choice question. This is your homework, and learn all about it. So we will discuss further. That question will be left or in the chapter we will discuss in the next lecture. So thank you.